जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्टर विजन एट बी. This is the course of biostatistics and lecture number 2, in which we will discuss some basic terminologies regarding the course biostatistics. Basic terminologies, firstly we will discuss the most famous statistical population and sample. These terms are used many times in our upcoming lectures, so we need to clear the concept of population and sample. Statistical population is a collection of all possible individuals or objects, measurements of interest. A parameter is a descriptive measure of the entire population of all the observations of interest. पहली तो बात यह है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन या ये जो आप आम लैंग्वेज में पॉपुलेशन बोलते हैं, इन दो अल्फाज में फ़र्क क्या है. हम स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं कि जो यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, इट मींस दैट कि जो हमारी स्टडी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी पॉपुलेशन के यूनिट कंसिडर होंगे. और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप जितनी भी फाइंड आउट करते हैं, जैसे एवरेज वैल्यू निकाली या मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट की, या इसके अलावा आप उसकी मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो इन तमाम को हम एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव मेजर कह रहे हैं. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मेजर आपको दे रहे होंगे. तो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, एंड ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर डिस्क्रिप्टिव in their character. So descriptive, already in the previous lecture we have discussed it very minutely. तो ये आपको क्लियर आपको कॉन्सेप्ट है कि डिस्क्रिप्टिव मेजर क्या होगी. सैंपल क्या है? सैंपल इज़ अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सैंपल जो है पॉपुलेशन का सबसेट है. क्लियर है? अ स्टैटिस्टिक describe a sample and serves as an estimate of corresponding population of parameter. Statistic क्या है? जिस तरह population की numerical quantity को हम parameter कह रहे हैं, सेम इसी तरीके से जो numerical quantities आप sample data के ऊपर working करने के बाद निकालेंगे, result values जो होंगी उसको statistic बोला जाता है. और वो उसी particular पॉपुलेशन का ही सैंपल लिया गया था जिसके मुतालिक आप वर्किंग कर रहे थे. ठीक है, तो उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को हम स्टैटिस्टिक कह रहे हैं. तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी हैं कि न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ और द रिजल्ट वैल्यूज़ विच आर फाइंड आउट बाय यूजिंग पॉपुलेशन डाटा इज़ नोन एज पैरामीटर. ऑन द अदर हैंड, द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ और द रिजल्ट वैल्यूज़ दैट आर computed from sample data is known as statistic. जब आप पॉपुलेशन और सैंपल से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और आपके पास जो है काउंट डाटा आ चुका है, तो उसमें मैथमेटिकली दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को हमने स्पेसिफाइड टर्म दी हुई है. उनमें से प्रायर जो है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेरिएबल. पहले वेरिएबल का आपको पता होना चाहिए. वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो इन अ स्पेसिफिक सिस्टम तब्दील हो रही हों. ठीक है, और इसका उलट, इसका अल्टरनेट क्या होता है? कांस्टेंट्स होते हैं. कांस्टेंट भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सिस्टम में वैल्यू फिक्स रखता है. ठीक है, इफ़ वी आर डिस्कसिंग वेरिएबल, तो इसमें दो आपको मज़ीद इसकी स्पेशलिटीज़ दिखाई देती हैं. यानी वेरिएबल आपको दो नोयत का दिखाई देता है. सबसे पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव नाम से काफ़ी ऑब्वियस है, क्लियर है. फॉर अ क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल, द करेक्टर बीइंग स्टडीड इज़ नॉन न्यूमेरिक. इसमें वैल्यूज़ आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाई नहीं देती, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर
all these sort of information are non-numerical. اس کا الٹ کیا ہوگا quantitative. In a quantitative variable, information is reported numerically. For example, number of children in the family. This is count data. اب اگر count data ہے تو پھر اس کی مزید 2 سب ڈویژنس ہیں. نمبر 1 is discrete, number 2 is continuous. A quantitative variable can be classified as discrete or continuous. تو اس میں ہمارے پاس دو مزید اس کی سب ڈویژنز آ جاتی ہیں. تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوالٹیٹیو میں نان نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں اور کوانٹیٹیو میں نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں. اور کوانٹیٹیو میں نومیریکل ویلیوز 2 مزید برانچز میں 2 مزید ٹائپس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, جس میں سے ایک ڈسکریٹ ہے اور دوسرا کنٹینیوس ہے. ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس دونوں ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس دونوں ناموں کو جو ویریبل کی ادر ٹائپس میں ڈویژن ہوئی ہے, اس کو ڈیٹیل سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. A discrete variable can take count data such as number of rooms in a home, number of admissions in a semester fall, number of people in participating in the race. Discrete data جو ہے, discrete variable جو ہے, اس میں countable values ہوں گی. It means that you can count the data on your fingertips. جیسے نمبر آف رومز ان اے ہوم, گھر کے اندر کمرے کتنے ہیں. نمبر آف ایڈمیشنز ان سیمسٹر فال, ایک سیمسٹر کے اندر نمبر آف ایڈمیشنز کتنے ہو رہے ہیں. نمبر آف پیپل پارٹیسپیٹنگ ان اے ریس, ایک ریس ہو رہی ہے اور اس میں نمبر آف پیپل جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں ان کی ویلیوز کتنی ہیں. اور اس کا جو دوسرا ہے کنٹینیوس ویریبل, اس میں اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے اس کے اکارڈنگ کنسیپٹ ہے, ویئر ایز دا کنٹینیوس ویریبل کین ٹیک اینی ویلیو فریکشنل اور انٹیجر ود ان گیون انٹرول سچ ایز ایج آف اے پرسن, ویٹ آف اے پرسن, ٹائم ٹیکن ٹو کمپلیٹ اے ریس. اس میں آپ کے پاس کاؤنٹ ویلیوز نہیں ہیں, ایک انٹرول کی فارم میں, ایک رینج کی فارم میں ویلیوز ہوں گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ویدر ہے, ویدر از آلسو کنٹینیوس ویریبل ان نیچر, یعنی اس میں منیمم سائٹ پہ بھی ٹیمپریچر رپورٹ ہو رہا ہے اور میکسیمم سائٹ پہ بھی ٹیمپریچر رپورٹ ہو رہا ہے فار اے پرٹیکولر لوکیشن. ایک ہی لوکیشن کی 2 ویلیوز آ رہی ہیں اینڈ 2 ویلیوز آر ان دا فارم آف رینج. تو جو پچھلی سلائیڈ تھی اس میں آپ نے ویریبل کی 2 ٹائپس پڑھی, کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو. اینڈ کوانٹیٹیو کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں, ڈسکریٹ اور کنٹینیوس, جس کو ابھی ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. جی اسٹوڈینٹس, دس از آور نیکسٹ سلائیڈ in which we have to discuss what are the sources to collect the data in statistics. ہمارے پاس مینلی پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. اب پرائمری ڈیٹا کو ہم فردر آن دیکھتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس میں what are the different natures through which we can collect the primary data. پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کو پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کنسیپچولی. collected for specific purpose and provide qualitative information. آپ نا اس کو بڑا کلیئر کٹ ایک چھوٹے سے سینٹینس سے بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم کلیکٹڈ ڈیٹا, را ڈیٹا جس کو بولا جاتا ہے, وہ بھی پرائمری ہی ہے. اور پرائمری ڈیٹا میں آپ کا پرپز اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے اور یہ آپ کو موسٹلی کوالٹیٹیو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی جو نیچرز ہیں تھرو وچ پرائمری ڈیٹا کین بی کلیکٹڈ, اس میں نمبر 1 ہے ڈائریکٹ آبزرویشن, یعنی آپ نے اپنی آبزرویشن سے جو ڈائریکٹ ہے آپ کے سامنے ہے وہ کیا انفارمیشن کلیکٹ کی. پھر کوشچنیئر,
सवाल नामा क्वेश्चनियर भी हमारे पास सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा है. इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और उसमें यस नो, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री, इस तरह की ऑप्शंस होती हैं. तो इट मीन्स कि इट आल्सो गिव्स यू द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव. और इंटरव्यूइंग, ये तो आप जानते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, और वो आपको रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसके ऊपर, और ये भी क्वालिटेटिव नेचर की एक इन्फॉर्मेशन आती है. इसको फर्दर ऑन आप जब स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर फाइंड आउट करनी है तो आप इसकी कोडिंग कर लेते हैं. तो डिफरेंट कोड्स दे देते हैं 1 2 3 या 0 1. बाइनरी फॉर्म में भी कोडिंग की जाती है, और अदर देन बाइनरी फॉर्म भी हमारे पास कोड्स होते हैं, ताकि डाटा क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो जाए और उसके ऊपर फिर आप वर्किंग कर सकें. अब इसके बरक्स सेकेंडरी डाटा क्या है? कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि पब्लिश्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज सेकेंडरी, जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल वर्क हो चुका है जिस डाटा पे, उसको भी सेकेंडरी कहा जाता है. और ये other than those purposes that are for primary data concerns, अगर आपने इसके अलावा कोई भी काम करना है तो सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल करेंगे. और सेकेंडरी डाटा में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज उसके ऊपर आपने ऑलरेडी वर्किंग कर ली हुई है, कोई ना कोई आपने उसके ऊपर टास्क अप्लाई कर लिया है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स. दैट्स वाई उसको हम सेकेंडरी डाटा में फॉल करते हैं. जी स्टूडेंट्स, दिस इज आवर comparison based slide related to the topic primary and secondary data. और इसमें इनिशियली जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इनकी डेफिनेशन में डिफरेंसेस आए थे, अब इनका ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं कि आइदर वी शुड प्रेफर प्राइमरी डाटा और अ सेकेंडरी डाटा फॉर आवर स्टैटिस्टिकल टास्क. अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप इन कंपैरिजन की बेस पे हमेशा सेकेंडरी डाटा को प्रेफरेंस दें या प्राइमरी डाटा को प्रेफरेंस दें. सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि बाज़ औक़ात आपके पास अवेलेबल डाटा जो है वो सेकेंडरी की फॉर्म में है, लेकिन आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. और बाज़ दफ़ा प्राइमरी डाटा की कलेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होती. ऐसे हमारे पास आप कह लें कि सिचुएशन या केस स्टडीज़ आ जाती हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर हमने सेकेंडरी के जो डाटा अवेलेबल है उसी के ऊपर भी वर्किंग करनी है. लेकिन बीइंग स्टैटिशियन यू शुड नो कि व्हाट इज द कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी डाटा और अ सेकेंडरी डाटा. तो अगर हमने डाटा कलेक्शन के लिहाज से देखना है तो प्राइमरी डाटा एक रिसर्चर जो है वो कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा ऑन दी अदर हैंड ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है. अब जो आपके पास रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है डाटा, प्राइमरी डाटा जिसको वो कह रहा है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है, और उसके लिए जो सोर्स वो यूज़ कर रहा है आइदर वो इंटरव्यू मेथड हो सकता है, वो क्वेश्चनियर मेथड हो सकता है, वो सर्वे हो सकता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है. तो देर आर मैनी सोर्सेज, बट द मेन फेमस सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा आर इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वे एक्सेट्रा. On the other hand, if we talk about secondary data, तो source for collecting the secondary data are books, journals, census report, etc. यानी जो भी published data है वो ही आपके पास secondary का source होगा. Primary data का accuracy level ज़्यादा है, secondary data का accuracy level कम है. Obviously जब आप primary data से data को collect कर रहे हैं और उसके लिए आप जो भी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी आप हाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, देयर इज़ नो आप उसमें
مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس میں کوئی اور ڈیٹا کا اضافہ کر نہیں سکتے یا آپ اس میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ نے اسی ڈیٹا کے ساتھ ہی ورکنگ کرنا ہے، دیٹس وائی وہ لیس ایکوریٹ ہوگا۔ کاسٹ وائز اگر بات کریں تو آبویسلی پرائمری ڈیٹا کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، تو اٹ از مور ہائی کاسٹ وائز، جبکہ سیکنڈری ڈیٹا آلریڈی اویلیبل ڈیٹا ہے تو اس کے اوپر آپ لیس کاسٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، دس از آور ending slide of today's lecture number 2. I request you, if you have any question, any problem, then you may ask in our comment box. اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو مزید اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تاکہ ہم آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق بھی اپنی لیکچرز کو مولڈ کر سکیں۔ اور اف یو ہیو اینی کیوری ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹسٹکس تو آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کریں، وی ول آنسر یو، اور فیڈ بیک بھی دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔